Respiration, lecture number 2. Now, this part, as you know, respiration is a process in which food, that is carbohydrate, fats, proteins, are broken down, and the energy which was stored in these biomolecules, in these complex organic compounds, is released because the bonds are broken down, and the released energy is made available for the synthesis of ATP. The released energy is made available for the synthesis of ATP. So, this process of respiration is conducted in two ways. One is by using oxygen and other by not using the oxygen. You know, if oxygen is used, then it is aerobic respiration. If oxygen is not used, then it is anaerobic respiration. Whatever I have written on the board is already discussed in lesson cell when we discussed mitochondria. Okay, so remember, mitochondria is a powerhouse of the cell. It is the major cell organelle which is performing aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया जैसा और एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हमने देखा था इन प्रोकैरियोट्स. द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज मेसोसोम. Okay, so aerobic eukaryotes have mitochondria. Aerobic prokaryotes have mesosome. Aerobic respiration involve 3 steps. Aerobic respiration involve 3 steps, and the steps are aerobic respiration, glycolysis, Krebs cycle, which is also called TCA, and the third step is ETS, electron transport system, ETC, electron transport chain, or respiratory chain, or it is respiratory chain. Now we have discussed that glycolysis occur in cell cytoplasm. Glycolysis occur in cell cytoplasm. Krebs cycle occur in matrix of mitochondria, and the respiratory chain ETS, it is occurring in the inner membrane of the mitochondria, which is highly folded. Okay, the inner membrane of mitochondria, highly folded structure, finger like appendage, इसको हमने शब्द यूज किया था क्रिस्टा, राइट. ओके, सो इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टा, माइटोकॉन्ड्रिया का ETS रेस्पिरेटरी चेन परफॉर्म करेगा. इफ वी टॉक अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन which is occurring in prokaryotes and even in some eukaryotic cell. Okay, याद करो चैप्टर सेल में आपने RBC सीखा था, human RBC. Okay, its main job is to distribute oxygen. So, being a eukaryotic cell, RBC should have mitochondria and perform aerobic respiration. But there is a great modification in the process of evolution. What is that? The RBC's main function is to distribute oxygen. अगर RBC खुद ऑक्सीजन यूज करेगी तो ऑब्वियसली उसके परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आएगा, परफॉर्मेंस स्लो डाउन होगा. So a modification done by RBC is that RBC doesn't have mitochondria and RBC is performing anaerobic respiration. Okay, so अच्छे से ध्यान में रखो, it's not that all eukaryotes are aerobes. It's not that all prokaryotes are anaerobes. Majority of the eukaryotes are aerobes. Few are anaerobic eukaryotes. Prokaryotes में variety of mode of nutrition है, variety of respiration है. So we cannot say broadly that prokaryotes mainly anaerobic ही होंगे. Okay, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर prokaryotic cell aerobic होता है तो उसके पास mesosomes रहेंगे. And anaerobic respiration is performed in 3 steps: glycolysis, decarboxylation, reduction. Okay? लेकिन आगे जाके मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि कभी कभी decarboxylation होता है या नहीं होता. What I said, decarboxylation may occur or may not occur. तो हमारी मेथड के अनुसार मैं यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया that in the process of anaerobic respiration decarboxylation may be involved, may not be involved. अगर decarboxylation involved है तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस है. अगर decarboxylation involved नहीं है तो ये 2 स्टेप की प्रोसेस है. अब anaerobes के एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे ही. So this is what
is aerobic respiration and anaerobic respiration briefing. Now we'll discuss in detail aerobic respiration. So, we compared respiration in plants and animals. The highlights are: plants don't have respiratory system. It occurs merely by diffusion. There are no separate windpipes. In animal, there is separate respiratory system involving windpipe as well as circulatory system in support for gaseous exchange. There is a well-developed mechanism like nostrils, trachea, windpipe, right? Then the bronchi, lungs, and the connective tissue blood helps in transportation of gases, oxygen towards the tissue and CO2 backwards to the lungs. Like this mechanism is not present in plants. In plant, it is merely taking place by the process of diffusion. The living cells are either in contact with the atmosphere, they are getting the oxygen, right? So if we talk about the entire layers we discussed in anatomy, the living cell is contact with each other. Parenchyma cell, cortex are having intercellular gaps which allow gases to diffuse. Along with that, lenticels, stomata are there. And one very important thing which has to be noted is that the green plant cell perform photosynthesis in which oxygen is given out. That oxygen which is given out by chloroplast is available in mitochondria for cellular respiration. Right? Okay. So this is how in plants the respiration is very simple, merely happening by the process of diffusion. And one more thing, this little amount of gaseous exchange is even enough for the plant because energy demand of the plant is less as compared to animals. Right? Okay. So come to the next part, that is equation of photosynthesis. See, this is a balanced chemical equation of photosynthesis. Complex organic compound, the preferred one is glucose, right? Broadly speaking, I'll say food is respired, food is oxidized. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फूड में प्रेफर्ड केमिकल ग्लूकोज है. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है. कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म हो गए तो कौन यूज होगा? फैट. फैट पे खत्म हो गए तो कौन यूज होगा? दैट इज प्रोटीन. Okay, so at this priority, the organism is using respiratory substrate and the food is oxidized. So glucose plus oxygen giving out 6 CO2 plus 12 water molecule and energy. This energy is in two forms, that is heat and ATP. Okay, इसके पहले भी हमने रीडिंग करते वक्त बोला था that remember the amount of heat released in aerobic respiration is more as compared to ATP. ATP से ज्यादा heat energy, ATP से ज्यादा heat energy release होगी और energy जो ATP में consume होती है, ATP यूज बनाने के लिए यूज होती है, ATP में conserve होती है, वो compared to heat कम होती है. Right? So this is the overall balanced equation. All living plant cells perform aerobic respiration. All cells of Monera, Protista, fungi, plant, Animalia, which are living, perform respiration. It may be aerobic, it may be anaerobic. Okay, broadly speaking, the process of respiration properties are: it is intracellular, it is redox, mainly oxidation. Why? Glucose में का hydrogen हम निकाल रहे हैं. So removal of hydrogen is oxidation. Okay, so it is properties of respiration. It is always intracellular. It is redox, mainly oxidative. It is catabolic, that is destructive. Complex organic compounds are broken down to simpler inorganic compounds, simpler compounds. So it is a catabolic process. In this process, the energy is released. So it is exothermic process. And the process is a multi-step. This is very important. I can compare the respiration process with burning. Okay, आप फ्यूल बर्न करते हो, उसको भी ऑक्सीजन लगता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बट दैट इज अ वन स्टेप प्रोसेस. बर्निंग इज अनकंट्रोल्ड वन स्टेप प्रोसेस. एक बार जलना शुरू हो गया तो उसको कंट्रोल करना दिक्कत जाता है. ओके, कॉन्ट्रास्ट टू दिस, respiration is enzymatically regulated, highly controlled multi-step process. Burning respiration एक जैसे ही है. Both are exothermic, catabolic and giving out
or complex organic compound are broken down to simpler inorganic compound. These are the similarities. But what is the difference? Respiration is controlled intracellular enzymatically regulated process. Okay, burning में heat और light generate होगा, respiration में heat और ATP बनेंगे. Okay, so if we talk about the types of organism performing respiration, okay, if we talk about types of organism performing respiration, then we can say, as there are two types of respiration, aerobic, anaerobic. Okay, again there are two types on the basis of O2 involvement. Okay, so we can here use the word facultative and strict. Okay, so see, I can say the aerobic organism is facultative aerobe, or there is one more type, aerobic organism can be facultative anaerobe. Facultative का मतलब चलेगा, लेकिन you know strictly aerobe मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो मरेगा, strictly anaerobe मतलब ऑक्सीजन है तो मरेगा. Okay, so like in organism what we say, that if aerobic person want to commit suicide, okay, तो हम क्या करते हैं, पानी में जंप करते हैं, पानी नहीं मिला मर गए. Okay, थोड़ा सोचो, अनेरोब को अगर सुसाइड करना है तो वो पानी के बाहर जंप करेगा. Okay, so sorry for the funny example, right? Okay, so see, facultative is चलेगा. Okay, चलेगा मतलब if I said facultative anaerobe, anaerobic condition चलेगी तो क्या दौड़ेगी? What is preferred? Aerobic, right? If I said facultative anaerobe, तो anaerobic condition चलेगी. It's okay. What is preferred? Aerobic. Okay, so these are the types of respiration and the respiratory organism. Okay, अब first step of aerobic respiration is glycolysis. Let us study in detail. Let's start with aerobic respiration. Step number 1. It is glycolysis. It is also called EMP pathway. चलो 5 बार रटना है. Glycolysis, EMP pathway. 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 Right? So it is a process in which glucose is lysed. शब्द की तरफ देखो, lysis, breakdown. Glucose का lysis, glycolysis. Right? Okay? So glucose का lysis होगा. देखो lysis जैसे कितने शब्द आप जानते हो? Electrolysis, water split up into hydrogen and oxygen. Photolysis, water split up in presence of light. Okay? Then glycolysis, glucose का breakdown to simpler chemical. Even there is plasmolysis, सेल का जो प्लाज्मा है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो फ्लूइड है, उसका lysis is plasmolysis. Right? So this is what is the word. Glucose का lysis is glycolysis. Glucose का lysis is glycolysis. Right? So see, aerobic respiration, step number 1, glycolysis. It is also called EMP pathway. हमेशा बात करते वक्त ग्लाइकोलिसिस से शब्द एक बार बोलना ही नहीं है. ग्लाइकोलिसिस EMP pathway, glycolysis EMP pathway, ऐसे ही बोलना है. Right? Then it is discovered by Embden, Meyerhoff and parents. Hence, according to first alphabet, because it is discovered by Embden, Meyerhoff, parents, it is also called EMP pathway. It is also called EMP pathway. And site of EMP reaction, it's a series of chemical reactions involving many steps. Right? So all those chemical reactions occur in cell cytoplasm. Okay? This is we have discussed in the lesson even set. Right now, this process, which is exactly opposite to photosynthesis. Okay? देखो, हम यहाँ से शुरू करते हैं. देखो, आप क्या जानते हो? Photosynthesis में CO2, O2 यूज करके ग्लूकोज बना, which is a monosaccharide. Okay? यहाँ पे I'll add the word. These are
monosaccharide. Glucose is a monosaccharide which condenses two molecules to form sucrose, which is a disaccharide. As we say, photosynthesis respiration are exactly opposite, reverse mechanism. तो वही हम सीख रहे हैं. फोटोसिंथेसिस में हमने बोला ग्लूकोज मोनोसैकेराइड बनता है, दो मोनोसैकेराइड कंडेंस होते हैं, डाइसैकेराइड सुक्रोज बनता है. सुक्रोज फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है. सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम एंड it is transported to all the meristematic tissue where the food requirement is huge because the cells are continuously dividing. Right? And one more thing, if the stored food, जो भी फूड प्लांट ने बनाया वो अगर ज्यादा है तो पहले मेरिस्टेम की तरफ जाएगा, ग्रोथ के लिए यूज होगा, एटीपी बनेंगे, राइट? और बच्चे वाला फूड स्टोरेज करने के लिए गोडाउन में जाएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. So how the chemicals are transported in the process of photosynthesis? First end product glucose, which is a monosaccharide, right? Then glucose, which is a monosaccharide, will be undergoing condensation. दो monosaccharide condense हो जाएंगे और दो monosaccharide condense होने के बाद एक disaccharide बनेगा, सुक्रोज. disaccharide फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, स्टार्च पॉलीसैकेराइड में गोडाउन में स्टोर होगा. अब ये जो प्लांट ने स्टार्च बनाया है वो हम भी खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे. एनिमल्स के लिए फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, प्लांट के लिए फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. So when they are consumed by the process of respiration, what will happen? Exactly ulta process. Starch will be degraded to sucrose. This is a multi-step process. Sucrose, which is a disaccharide, will be broken down to two monosaccharides, 6C, that is glucose and fructose. Okay, sucrose will be a disaccharide broken down to two molecules, that is glucose and fructose. Now, as these are isomers of each other, okay, they are readily interconvertible, and these 6C chemicals readily participate in further breakdown, that is lysis of glucose, which is called glycolysis. ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? Glycolysis, to produce pyruvic acid. Okay, two molecules of pyruvic acid. अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, ग्लूकोज के पास अगर 6 कार्बन है तो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के पास 3C, मतलब टोटल हो गया 6C. राइट? ओके, सो दिस टोटल प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, देखिए यहां पूरा मैंने जो रेड पेन से लिखा है, conversion of glucose to two molecules of pyruvic acid, which is a partial breakdown. Pyruvic acid ये भी organic chemical है, okay, complete inorganic chemical में अभी वो divide नहीं हुआ. So glucose is completely broken down to pyruvic acid. This multi-step reaction जो यहाँ से यहाँ तक हुई, this multi-step reaction which is occurring in cell cytoplasm was in detail discussed by Emden Meyerhoff parents, and it is called glycolysis. इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, राइट? और इसमें मेन एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड है. इसके अलावा एनर्जी एटीपी बनती है. राइट नाउ, as all the processes are enzymatically regulated, disaccharide sucrose is broken down to glucose, it is also enzymatic reaction. Starch is broken down to sucrose, is also enzymatic reaction. Okay, so अब हमको ये केमिकल रिएक्शन डिटेल में सीखनी भी है, इसके साथ साथ ये एंजाइम के नाम भी सीखने हैं. So this is all about briefing of glycolysis, right? This briefing is given on page number 228. Okay, ये सिंपल 228 पेज नंबर पे दिखा है. डिटेल ग्लाइकोलिसिस पेज नंबर 229 से शुरू होता है. So let us discuss that diagram. 14.1 EMP pathway glycolysis. So these are the chemical reactions involved in glycolysis. अब सबसे पहले, as we decided, रट्टा मारना है. Okay, shall I tell you one very important thing? You have already learned it. आपने ये साइकिल पूरा लर्न किया है, बस उल्टा लर्न किया है. सब लोग सुनो मेरी बात,
C3 साइकिल निकालो, टेक आउट C3 साइकिल, निकाली, राइट? कम टू 3PGA. आई एम रीडिंग फ्रॉम 3PGA. ओके, देखो गलती कर रही हूं क्या? सी, यहां से शुरू करती हूं. 2 molecules of 3PGA, या सिर्फ PGA नाम की तरफ ध्यान दीजिए, राइट? सी, PGA, डाई-PGA, पागल, याद है? PGA, डाई-PGA, पागल, राइट? पागल प्लस धप, ग्लूकोज फॉर्मेशन. तो स्टेप्स क्या है वहां पे? पागल प्लस धप, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज. किया है ना लर्न? आपने पूरा ये यहां से यहां तक ऑलरेडी लर्न किया है. उसको हमने अब उल्टा बोलना है. 1 to 10 जानते हो तो 10 to 1 आसानी से बोल सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, राइट? ओके, सेम कार्बन नंबर, सेम सीक्वेंस, सेम. ओके, बस हमको उल्टा बोलना है. चलो फॉलो, रेडी? पहले लर्न करेंगे, बाद में लिखेंगे. बिना लर्न किए कोई नहीं लिखेगा. पहले लर्न करेंगे, रट्टा मारेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट विथ मी. ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, EMP पाथवे, EMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, EMP पाथवे, EMP पाथवे. ओके, सी, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, धप, पागल, धप, पागल, पागल, धप. दे आर आइसोमर्स, यू नो, बराबर? सो 1 पागल remain पागल, this dhap also converted to पागल. Okay, DHAP, dihydroxyacetone phosphate, PGAL, 3-phosphoglyceraldehyde. धप और पागल के चक्कर में पागल मत हो जाना. ओके, ठीक से ध्यान रखना. ओके, सो आई रिपीट. ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, धप, पागल, धप, पागल. 2 molecules of PGAL, 2 molecules of PGAL, 2 molecules of 1,3-dipGA, 2 molecules of 1,3-dipGA, 2 molecules of 3PGA, 2 molecules of 3PGA, 2 molecules of PGA, 2 molecules of 2PGA. अब देखो, हाँ, what is 3PGA? You know it is glyceric acid having 1 phosphate attached to 3rd carbon. What is 3PGA? It is a glyceric acid containing 1 phosphate attached to 3rd carbon. So it is 3PGA. Okay, so 3PGA converted to 2PGA. 3PGA converted to 2PGA. Right? And 2PGA form PEPA, and PEPA ultimately gives PA. Right? चलो एक बार फिर से बोलते हैं, थोड़ा सा फास्ट. स्टार्ट. ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, EMP pathway, EMP pathway, glycolysis, EMP pathway, glycolysis, EMP pathway, glucose, glucose, glucose 6 phosphate, glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 diphosphate, fructose 1,6 diphosphate, dhap, pagal, dhap, pagal. 2 molecules of PGAL, 2 molecules of PGAL, 2 molecules of 1,3-dipGA, 2 molecules of 1,3-dipGA, 2 molecules of 3PGA, 2 molecules of 3PGA, 2 molecules of 2PGA, yes, 2 molecules of 2PGA, 2 molecules of PEPA, 2 molecules of PEPA, 2 molecules of PA, 2 molecules of PA. शॉर्ट फॉर्म में हमने अच्छे से रट्टा मारना है. प्लीज अच्छे से रट लो, बहुत अच्छे से, राइट? और आपने अभी लिखना भी है. वन मोर रिक्वेस्ट इज, My whiteboard is not allowing me to complete it, तो मैंने ऐसा और ऐसा लिखा है. तो आप लोग क्या करेंगे? पूरा सीधा, मीन्स यू डोंट गो दिस वे, आप सीधा ऊपर से नीचे तक लिखोगे. ओके, प्लीज राइट डाउन कंप्लीटली, कीपिंग एटलीस्ट 2 लाइन्स इन बिटवीन. 2 केमिकल के बीच में 2 लाइन्स छोड़नी है. क्यों? आगे का कॉम्प्लिकेशन जो सीखना है, पहले सिंपल तो लर्न कर लो. ठीक है, प्लीज राइट डाउन.
चलो जल्दी जल्दी करना है। ऊपर से मार्जिन से शुरू करो, एकदम मार्जिन से शुरू करो। सबसे पहले टाइटल डालेंगे, ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे। दो केमिकल के बीच में दो दो लाइन छोड़ने हैं। मेरे जैसे हर इंपॉर्टेंट केमिकल को अंडरलाइन किया है मैंने, ब्रैकेट में कार्बन का नंबर भी मेंशन किया है। जुगाड़ू बात बोलनी है तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक पूरे के पूरे 6C है, उसके बाद पूरे के पूरे 3C है, ये भी आप जानते हो। पूरा पेज लिखेंगे, ऊपर से मार्जिन से शुरू करो। सबसे पहले टाइटल, ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे, हर केमिकल को अंडरलाइन करना है। दो केमिकल के बीच में दो दो लाइन लिखने हैं, छोड़ने हैं, और पूरा वन स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। मेरे जैसा नीचे अंत में आधा नहीं लिखेंगे। डोंट गो हॉरिजॉन्टल, जस्ट कंप्लीट द साइकिल वर्टिकली। यू हैव 2 minutes. See, same thing, I have added few points, right? So what I have added, this one here I use green pen, and these red points I have added, right? Okay, chalo. See now in detail the process. ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, चलो मेरे साथ। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP PGAL, DHAP PGL, 2 molecules of PGAL, 2 molecules of PGL, 2 molecules of 1,3-dipGA, 2 molecules of 1,3-dipGA, 2 molecules of 3-PGA, 2 molecules of 3-PGA, 2 molecules of 2-PGA, 2 molecules of 2-PGA, 2 molecules of PEPA, 2 molecules of PEPA, 2 molecules of PA, 2 molecules of PA. केमिकल के नाम लर्न हो गए, ये बहुत जरूरी है। ये केमिकल के नाम जब तक नहीं लर्न होगे, आप आगे का कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो प्लीज रट्टा मारो, प्लीज रट्टा मारो, राइट? ओके, अब रट्टा मार लिया। अब केमिकल के नाम की तरफ ध्यान से देखना है। ठीक, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate, so obviously the phosphate is added. Who is adding phosphate? ATP, right? So this adenosine triphosphate is giving phosphate to glucose. ग्लूकोज में जो फॉस्फेट ऐड हुआ वो 6th कार्बन को ऐड हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, right? This is called step of activation. See, glucose is a stable molecule. It won't participate in chemical reaction unless and until it is activated. तो एक्टिवेशन के लिए एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कौन देगा? एटीपी देगा। तो एटीपी ने क्या क्या दिया ये स्टेप में? फॉस्फेट दिया, एनर्जी दी, ग्लूकोज को एक्टिवेट किया। नाउ ग्लूकोज स्टार्टेड रिएक्टिंग। ऑब्वियसली दिस इज एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइम बाद में लर्न करते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन। तो ठीक, glucose converted to glucose 6 phosphate, so phosphate is added, phosphate is donated by ATP, so you get glucose 6 phosphate. Here the phosphate which is added to 6th carbon. Phosphate which is added, it is added to 6th carbon, so the name is glucose 6 phosphate. Now glucose 6 phosphate isomerizes to fructose 6 phosphate. You know glucose and fructose are isomers of each other. Just activation by one ATP is not sufficient, so fructose 6 phosphate is again activated. Fructose 6 phosphate is activated by one more ATP, and that is one more IP, inorganic phosphate, is added, and that is added to the first carbon. Hence the name of the chemical fructose 1,6 diphosphate. Hence name of the chemical fructose 1,6 diphosphate, which is a 6C chemical. Right? मैंने आपको क्या बोला था? पूरे यहां से यहां तक, ओके, ये जो क्लीवेज का स्टेप है, स्प्लिटिंग का स्टेप है,
उसके पहले के पूरे 60 है. Okay, so what you get? Fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate cleaves. Fructose 1,6-diphosphate cleaves to produce DHAP and PGAL. It cleave to produce DHAP and PGAL. Simple. 6C chemical है. इसके दो टुकड़े होंगे 3C. So one chemical is DHAP and other chemical is PGAL. PGL and DHAP are isomers of each other. Okay, so PGL remain PGL, DHAP isomerizes and become PGL. So देखो, एक पागल तो पागल है ही, दूसरा DHAP भी पागल हो गया, तो आपके पास कितने पागल आ गए? 2. Okay, we know पागल has immense capacities. याद करो C3 cycle, पागल can prepare any glucose ऐसे बोला था हमने. पागल has immense capacities. You even experienced it. Okay, sorry, I didn't say anything to you. Okay, right. So what I said, 6C chemical fructose 1,6-diphosphate cleave to produce DHAP and pagal. Right? Pagal remain pagal, DHAP isomerizes to pagal. You have 2 pagal. Right? 2 molecules of PGAL, phosphoglyceraldehyde. 2 molecules of 3-PGAL. Now, यहाँ पे ठीक से देखो. Is giving out hydrogen. ये स्टेप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा. PGAL ने हाइड्रोजन दे दिया. So hydrogen acceptor is NAD. NAD P नहीं. NADP is in photosynthesis. NAD is in respiration. Okay, so see, PGAL gives out hydrogen. PGAL gives out hydrogen. The hydrogen given out by PGAL is accepted by NAD, and NAD is reduced to NADH. NAD is reduced to NADH. Right? So here, as we said, ratio is always 1:1. So 2 molecules of PGAL gives out 2 hydrogen accepted by 2 NAD and 2 NADH are formed. Okay, देखो यहाँ पे भी 1:1 ratio ही है. For activation of 1 glucose, 1 ATP is required. 1 glucose 6-phosphate gives you 1 fructose 6-phosphate. Again 1 ATP is used. You get fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate cleaves to 3C and giving you DHAP, dihydroxyacetone phosphate, 3-PGAL, 3-phosphoglyceraldehyde. Right? Now, DHAP, PGAL are isomers of each other. So, PGAL remain PGL, DHAP isomerizes to PGL, and what you are getting is 2 molecules of PGAL. 2 molecules of PGL gives out 2 hydrogen. 2 molecules of PGAL gives out 2 hydrogen and 2 NADH are produced here. One more thing happened here, 2 IP are added. Right? So देखो, PGAL ने IP ले लिया, PGAL accept IP. So addition of inorganic phosphate, addition of IP is phosphorylation. Addition of IP is phosphorylation. So here PGAL is accepting inorganic phosphate, it is phosphorylating. Giving out hydrogen, it is oxidized. So this is a step of oxidation plus phosphorylation. PGAL converted to 1,3-dipga. This is a step of oxidation plus phosphorylation. It is oxidative phosphorylation of PGAL. Oxidation किसका हुआ? PGAL का. Phosphorylation किसका हुआ? PGAL का. Oxidative phosphorylation किसका हुआ? PGAL का. Right? So you are getting 2 molecules of 1,3-dipga. Again 3C. This is now dephosphorylated. Again देखो अब शब्द को समझो. Phosphorylation, addition of inorganic phosphate. Removal of inorganic phosphate is dephosphorylation. Same thing. Addition of CO2, carboxylation. Removal of CO2, decarboxylation. Addition of inorganic phosphate, यहाँ पे inorganic phosphate add हुआ था, यहाँ पे inorganic phosphate add हुआ, phosphorylation. यहाँ पे inorganic phosphate निकाल दिया गया, dephosphorylation. और inorganic phosphate जो बाहर निकला वो किसने लिया? It is accepted by 2 molecules of ADP. It is accepted by 2 molecules of ADP. Again, 2 molecule of 1,3-dipga gives out 2 molecules of IP.
2IP accepted by 2-ADP, adenosine diphosphate, to form 2 molecules of ATP, adenosine triphosphate. Okay, so देखो यहाँ पे ATP बने, यहाँ पे ATP बने, यहाँ पे NADH बना, यहाँ पे ATP बने. Okay, so 1,3-dipGA undergo dephosphorylation, gives out 2 ATP molecule because the phosphate given out is accepted by ADP. Okay, so after dephosphorylation of PGA, you get 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid. Okay, so what is the nomenclature? It is a glyceric acid with 1 phosphate attached to 3rd carbon. You know, it is a glyceric acid Ga with 1 phosphate attached to 3rd carbon. This 3-phosphoglyceric acid. This 3-phosphoglyceric acid is isomerized to 2 PGA. मतलब ये जो phosphate 3rd carbon को attached था, वो 2nd carbon को shift हो गया. So it isomerized to form 2 molecules of 2-phosphoglyceric acid. It is a glyceric acid with 1 phosphate attached at 2nd carbon. Okay, so here you have 2 molecules of 2 PGA. It is dehydrated. Water is removed. It is dehydrated, water is removed, and you get 2 molecules of phosphoenol pyruvic acid, that is PEPA. 2 molecules of PEPA gives out phosphate, gives out energy. PEPA में जो energy rich bond थे वो टूट गए, inorganic phosphate निकल गया, और वो inorganic phosphate and energy ADP ने ले ली, and you get 2 molecules of ATP. You get 2 molecules of ATP, and the last product of glycolysis. Last product of glycolysis is 2 molecules of pyruvic acid. Right? 2 molecules of pyruvic acid. Right? So this is what is the total process. यहाँ पे थोड़ा calculation पे अगर बात कर ध्यान देते हैं. Okay, if we are working with calculation, see, 1 glycolysis uses 2 ATP. देखो यहाँ पे 2 ATP यूज हुए. ओके, प्रोड्यूसेस, चलो कैलकुलेट करो. देखो यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP, सो बने 4 ATP. सो आई विल राइट डाउन ATP 4. हाउ मेनी NADH? 2 NADH. And how many pyruvic acid? 2 pyruvic acid. Right? 1 glycolysis generates 4 ATP, 2 NADH, 2 pyruvic acid, and for the process it needs 2 molecules of ATP. Okay, so this is all briefing, or this is bit information about the ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे. अब और डिटेल में आगे के लेक्चर में देखते हैं. प्लीज राइट डाउन द थिंग्स इन डिटेल. वन मोर पॉइंट, वन टाइम मोर आई एम सेइंग, आपने ये सीधा लिखना है. डोंट प्रोसीड लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज EMP पाथवे ग्लाइकोलिसिस.